So we have right now a very important topic to discuss, that stoichiometry. और stoichiometry को define करने के लिए और इसकी details के लिए मैं example ले रहा हूँ एक reaction की. I am taking example of this reaction. I have N2 gas, मेरे पास N2 gas है, ये react कर रहा है with hydrogen gas. It reacts with hydrogen gas, and when N2 reacts with hydrogen gas, we get what we call ammonia, NH3. NH3, it's again a gas. So right now I have N2 gas here. N2 gas reacts with H2 gas, and when they react with each other, they form ammonia. But have a look at this reaction. We have on reactant side, this is reactant side, ये reactant side है, and on reactant side we have N2, that means 2 nitrogen atoms. Yes, sir. 2 nitrogen atoms, and on product side we have only 1 nitrogen atom. Yes, yes. So on reactant side we have 2 nitrogen atoms, but on product side we have only 1 nitrogen atom. That means nitrogen atoms are not balanced in this reaction. यहाँ पे nitrogen atoms balanced नहीं है. Similarly, if you take a look at hydrogen, यहाँ पे on reactant side we have 2 hydrogen atoms. But on product side we have 3 hydrogen atoms. That means hydrogens are not balanced in this reaction. So हमारा पहला काम क्या रहेगा? What will be our first step? We will try to balance this reaction. हम इस reaction को balance करेंगे, okay? Yes. I have 2 nitrogens here, and there I have only 1 nitrogen. So I will multiply this nitrogen by 2 in order to equate them. ठीक, तो यहाँ से आगे 2 नाइट्रोजन बेटा, यहाँ से भी आगे 2 नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन आर बैलेंस्ड नाउ. अब मैं हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने की कोशिश करें. यहाँ देखें, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स है. We have 2 hydrogen atoms here, but here we have 3 to our 6 hydrogen atoms. So if I have 6 hydrogens here, यहाँ पे मेरे पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए. So I will multiply this by 3 to r will be 6. So now this reaction is completely balanced. ये reaction completely balanced है. ओके, और मेरे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है. अच्छा, मुझे बोले इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने क्या किया? मैंने इन न्यूमरल्स की हेल्प ली. मैंने 3 की हेल्प ली, मैंने 2 की हेल्प ली, और यहाँ n के साथ जो नंबर है, is that 1? Yes. So here are these numerals 1, 3 and 2. मेरे पास ये नंबर्स है, ये न्यूमरल्स है 1, 3 और 2. जिन न्यूमरल्स की हेल्प से मैंने इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया. राइट? ये जो न्यूमरल्स बेटा यहाँ पे यूज हुए हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, इन न्यूमरल्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक coefficients. They are called stoichiometric coefficients, right? So I have stoichiometric coefficients here. That's 1, 3 and 2. So अगर आपसे कोई पूछे बेटा what are stoichiometric coefficients, आप कहेंगे numerals या numbers which are used to balance a chemical equation. जिनसे हम किसी chemical equation को balance करते हैं, those are called stoichiometric coefficients. हम इन्हीं को stoichiometric coefficients बोलते हैं. ठीक, कितना क्लियर बेटा? ओके, बट these coefficients tell you a very important information. They provide you a very important information. ये हमें एक important information देते हैं. What's that information? How many N2 are present here? No, N2. I'm talking about N2. N2 is 1. So I have 1 N2. 1 N2 means I have 1 molecule of N2. I have 1 molecule of N2 बेटा. मेरे पास एक मॉलिक्यूल है N2 का. ये रिएक्ट कर रहा है with how many molecules of H2? Yes, it's reacting with 3 molecules of H2. It's reacting with 3 molecules of H2 gas, right? और वहां से बन रहा है प्रोडक्ट, that's ammonia, NH3. और इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? So I have 2 molecules of NH3. I have 2 molecules of ammonia here. So यहाँ पे मुझे एक important information मिल रही है from these coefficients. और वो information क्या है बेटा? मुझे ये पता चल रहा है that 1 molecule of N2 is reacting with 3 molecules of H2. तब जाके I am getting 2 molecules
of NH3. Right? So one molecule of N2 reacts with 3 molecules of H2 and I am getting 2 molecules of NH3 as product. तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं इन न्यूमरल्स से मुझे क्वांटिटेटिव रिलेशन मिल रही है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्वांटिटेटिव रिलेशन मिल रही है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड. सर व्हाट्स मेंट बाय क्वांटिटेटिव रिलेशन? क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब मुझे यहां ये पता चल रहा है रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है और फिर उससे कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन रही है. Do you understand? कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की रिएक्ट कर रही है और वहां से कितनी क्वांटिटी किनकी बन रही है? प्रोडक्ट्स की बन रही है. बेटा ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है ना बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसी को स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं. So quantitative relation between reactants and products is called stoichiometry. तो stoichiometry का मतलब क्या है? Stoichiometry is this particular information. Reactants की क्या quantity react कर रही है और वहां से products की क्या quantity बन रही है. इतना क्लियर? इतना बेटा क्लियर? So यहाँ पे मुझे पता चला one molecule of N2 is reacting with 3 molecules of H2. They are forming 2 molecules of product that's NH3. So I have 2 definitions for now. अभी के लिए मेरे पास 2 definition है. First stoichiometric coefficients and stoichiometric coefficients को मैंने कैसे define किया? मैंने आपसे कहा ये numbers है which are used to balance a chemical equation. फिर मैंने कहा बेटा इन नंबर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और वहां से कितना प्रोडक्ट बन रहा है. यानी ये मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रोवाइड करते हैं. ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन द रिएक्टेंट्स कंबाइनिंग एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसी क्वांटिटेटिव रिलेशन को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं. ठीक बेटा, लेकिन मुझे बोले बेटा यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन मिली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ. व्हाट डज दैट मीन? मुझे ये पता चल रहा है कि N2 के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जाके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं. तो ये सारी रिलेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रही है. किसमें मिल रही है? इसी इंफॉर्मेशन को हम 3 और टाइप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 और वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मुझे यहां पे मॉलिक्यूल्स पता है ना, इन मॉलिक्यूल्स को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं और फिर उसको मास में कन्वर्ट कर सकता हूं, फिर उसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. Because you know number of molecules का मोल के साथ रिलेशन याद है? N/Na is equal to number of moles. और फिर आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर मोल्स मिल गए, मोल्स की मास के साथ रिलेशन है. नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास, राइट? फिर आपको पता है मोल से आपको वॉल्यूम भी मिलेगा बिकॉज़ नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम बाय 22.4 at STP. राइट? तो मेरे पास अभी क्या है बेटा? व्हाट डू आई हैव फॉर नाउ? नंबर ऑफ. मुझे इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है. मैं इनको मोल्स में एक्सप्रेस करूंगा. किस में? मोल्स में एक्सप्रेस करूंगा. जरा बेटा ध्यान दे. डू यू नो, आपको पता है ना, वी हैव अ फार्मूला दैट्स नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय. मुझे यहां मोल्स निकालने हैं. जरा बोले बेटा मोल्स कैसे निकलेंगे? शाबाश. मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बोलो. यहां से मैं n निकाल रहा हूं. इसके भी नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स. I will try to calculate number of moles of N2, number of moles of H2, number of moles of NH3 involved in this reaction. Right? Number of moles निकालने के लिए फॉर्मूला n by Na. तो नंबर ऑफ मोल्स बोलो किसके बराबर आएगा? n by Na. n कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? So is it 1 by Na? Yes sir. Is it 1 by Na here? So I have 1 by Na moles of N2. Yes sir. Right? Because I am calculating number of moles. ये आ गया 1 by Na moles. वहां बोलो शाबाश. Number of molecules n is 3 divided by Na. So is this 3 by Na moles? Yes sir. Is this 3 by Na moles? वहां बोलो शाबाश. That's 2. Number of molecules is 2 divided by Na. 2 by Na moles. Right बेटा? तो ये 1 by Na moles,
will cancel out because they are common in all the three. Na is ratio, so they are common in this ratio, they will cancel out. तो यहाँ रह गया ये 1 मोल, ये बनेंगे 3 मोल्स, ये बनेंगे 2 मोल्स. आप देखिए जितने मॉलिक्यूल उतने ही मोल्स बन रहे हैं. 1 मॉलिक्यूल 1 मोल बन रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स बन रहे हैं, बिकॉज़ Na बाद में कैंसिल हो रहा है. ऑलराइट बेटा, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना 1 मोल ऑफ H2, सॉरी 1 मोल ऑफ N2, 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2. 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 and they form 2 moles of NH3. They form 2 moles of. फिर से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस बारे में? रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंबाइन हो रहे हैं. पहले इंफॉर्मेशन थी रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, मैंने उसको कन्वर्ट किया मोल्स में. अब मैं मोल्स की टर्म्स में बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंबाइन हो रहे हैं और उससे फिर प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं. राइट, रिएक्टेंट का 1 मोल N2 का कंबाइन हो रहा है H2 के 3 मोल्स के साथ, उसके बाद वहां से 2 मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं यानी अमोनिया के बन रहे हैं. राइट, मुझे बोलो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये भी हमें बता रहा है ना रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है, रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है और वहां से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बन रही है. लेकिन इस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मोल्स. पहले इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थी, अब एक कन्वर्ट होके किस में मिल रही है? इन टर्म्स ऑफ मोल्स. इसको भी स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे. तो यहां भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन मिल गई, बट इन टर्म्स ऑफ मोल्स. इन टर्म्स ऑफ मोल्स इज अगेन स्टोइकियोमेट्री. तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी देखते हैं कितनी कंबाइन हो गई और वहां से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बन रही है. ये लेकिन हम या तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल्स देख सकते हैं. राइट, जरा एक कॉपी करें बेटा, इसके बाद हम इसको आगे और पढ़ेंगे. कॉपी फाइन. सो अभी के लिए for now I have N2 gas, it reacts with H2 gas and they form ammonia, NH3 gas, NH3 gas, and I have already balanced this chemical equation. I have 1 times N2 and this is 3 times H2 and this is 2 times NH3. उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन बेटा लिख ली, 2 टाइप से लिखी, 2 तरीके से लिखी. पहले मैंने कहा I have 1 molecule of N2, it's reacting with 3 molecules of H2 and they are forming 2 molecules of NH3. Then I converted this information into number of moles and number of moles में ये आ गया 1 mole of N2, right? ये आ गए 3 moles of H2 and ये आ गई बेटा 2 moles of NH3. अब आपको मॉलिक्यूल्स मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत बार बार नहीं है, क्योंकि आपने देखा जितने मॉलिक्यूल आते हैं उतने ही बाद में मोल्स भी आते हैं. याद रखना, बार बार आप ये कैलकुलेट करेंगे. 1 molecule will represent 1 mole, 3 molecules will represent 3 moles, 2 molecules will represent 2 moles. फाइन ओके. उसके बाद ये आ गया मोल. अब मोल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इन मास. I can convert mole into because I have a very important equation. I have number of moles is mass by molar mass. You remember? Yes, sir. It's mass by मुझे mass चाहिए because moles is given. 1 mole. Number of moles is given. मुझे क्या चाहिए? Mass. अच्छा, molar mass आपको कहां से मिलेगा? फॉर्मूला से. Very good, right. तो क्या बेटा इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? I'll cross multiply number of moles with molar mass and with W, right? और यहां से मुझे मिलेगा given mass जो हमें निकालना है. So in order to calculate this mass, I use this formula N into W. तो यहां पे अब मैं क्या निकालने वाला हूं बेटा? यहां पे ध्यान दीजिए, मैं निकालने वाला हूं इस फॉर्मूला से यही इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास. फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इज मास इज number of moles into molar mass. Yes, sir. Mass is number of moles into. What's number of moles here? Number of moles is 1 into. W is molar mass. What's molar mass? 28. 14 एक नाइट्रोजन का. 14 एक यहाँ 2 है ना मल्टीप्लाई.
कितना आ गया? So 1 into 28 grams molar mass. Sorry, okay, ये आ गया? Okay, to 28 grams. Now यहाँ similarly यहाँ. What's number of moles? 3. Number of moles is 3. Number of moles multiplied by molar mass. What's molar mass of H2? H2 is 2. एक H का 1, 2 का 2, तो 3 into 2 grams, right? Similarly, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे. Number of moles 2 multiplied by molar mass. Multiplied by molar mass. शाबाश. नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 70, तो 14 plus 3 is 17, right? राइट बेटा? समझ आ रही है बात? इनको कंफ्यूज किस सर ये 2 ये 3 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 2 3 वगैरह हमने पहले ही लिया है ना. ये है 3, ये 3 है, ये 3 है जो आपको चाहिए, ये 2 है जो आपको मल्टीप्लाई करना है. समझ आ रही है ना बात? तो 2 पहले ही हमने मोल में लिया है ना. आई ऑलरेडी टेकन 2 मोल्स, आई ऑलरेडी टेकन 3 मोल्स, तो दो बार इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत. आई ऑलरेडी टेकन दिस 1 मोल, फिर हमने लिया 1 times 28, 3 times 2, 2 times 17. I have already taken that. Okay, what's that? What's that? Shabash. 1 into 28 is 28 grams, and then 3 into 2 is 6 grams. Then this is 2 into 17, that's 34 grams, right? फिर से information मिल गई. यहाँ से अब information हमें मिल गई in terms of mass. So बेटा मुझे बताया, what does it represent? What does it represent? Shabash. It represents 28 grams of nitrogen, 28 grams of N2 react with 6 grams of H2 and they form 34 grams of NH3. Right? 28 grams N2 के react with 6 grams of H2, they form 34 grams of NH3. Again I have this information. But this information is in terms of mass. This information is in terms of mass. और यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? Reactants का कितना मास रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट्स का कितना मास रिएक्ट कर रहा है, और उससे प्रोडक्ट का कितना मास बन रहा है. राइट? रिएक्टेंट्स का कितना मास रिएक्ट कर रहा है और उससे प्रोडक्ट का कितना मास यहाँ पता चल रहा है. रिएक्टेंट में 28 ग्राम N2 के रिएक्ट कर रहे हैं 6 ग्राम्स ऑफ H2 के साथ, वहां से बन रहा है 34 ग्राम्स ऑफ NH3. समझ आ रही है बेटा बात? अगेन आई हैव क्वांटिटेटिव रिलेशन. Again I have quantitative relation between reactants and products. Again I have quantitative relation between reactants and products. But this relation is in terms of mass now. Again it's stoichiometry. So in stoichiometry, you actually get quantitative relation between reactants and products in terms of number of molecules, in terms of number of moles, and in terms of mass. Alright? Yes. One more thing, I can convert it into volume because we have gases here. And for gases, we use a very beautiful formula of mole concept. That's number of moles is V by 22.4. Right? तो क्या मुझे यहाँ से वॉल्यूम मिल सकता है? Yes. कैसे इन दो को क्रॉस करके बता वॉल्यूम क्या आएगा? N into 22.4 will be volume. Am I right? Yes. N into 22.4 will be volume. So I can write volume here is N into 22.4. Now I try to calculate volume in all the cases. N into 22.4. Remember what's N? What's N? Number of moles. And what's moles here? 1. So N is 1 multiplied by 22.4. This is volume, and unit will be liters because units in liters. Volume is in liters. Okay, here what's number of moles? 3 moles. So N is 3 into 22.4 liters, right? And here we have N. Number of moles is 2 into 22.4 liters. 22.4 is common. It's in ratio, so I'll cancel all of them. This 22.4 and these 22.4s will cancel out. So what will be here? This is 1 liter, right? And these are 3 liters, and these are 2 liters, right, Brady? So tell me, what's the information now? What's the information now here? Shabash? What's the information? 1 liter of N2 gas. 1 liter of N2 gas will react with 3 liters of H2 gas, and they will form 2 liters of NH3 gas. So अभी तक जितना भी हमने मोल में पढ़ा है, I am applying all that here. सब कुछ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. समझ आ रही है बेटा बात?
So 1 liter of N2 gas reacts with 3 liters of H2 gas and they are giving 2 liters of NH3 gas. So again, here I have information about what volume of reactants is reacting, what volume of reactants is reacting, and what volume of products is formed. Right? So I have information what volume of reactants is reacting and what volume of product is formed. So what's the volume of reactants that are reacting? 1 liter and 3 liters are reacting and they are forming 2 liters of product. Am I right? So मुझे बताएं, is this quantitative relation between reactants and products? Yes. But in terms of, it's again stoichiometry. So this is all about stoichiometry. What's stoichiometry then? Stoichiometry is a means of providing quantitative relation between reactants that are reacting and products that are formed, but in terms of number of molecules, number of moles, mass and volume. समझ आ रही बात? तो रिएक्टेंट कितने रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इस चीज को आप 4 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा. या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस करोगे, या नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करोगे, या मास में एक्सप्रेस करोगे, या वॉल्यूम में. Only one thing. Have a look. One thing here. Listen. What's this? 1 molecule. इसका 1 molecule रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 mole रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 liter रिएक्ट कर रहा है. That means जो stoichiometric कोएफिशिएंट है ना 1, ये 1 molecules को भी रिप्रेजेंट करता है, ये 1 mole को भी रिप्रेजेंट करता है, ये 1 volume को भी रिप्रेजेंट करता है. ये आपको बार-बार निकालने की जरूरत नहीं है. ना तो आप मॉलिक्यूल बार-बार निकालोगे, ना मोल्स, ना वॉल्यूम, सिर्फ मास निकालना पड़ेगा. अब देखो mass is different, it's 28. So 1 was the stoichiometric coefficient, 1 is the number of molecules of H2 reacting, 1 is the number of moles of H2 reacting, 1 liter is the volume of H2 reacting. Similarly, have a look here. What was the stoichiometric coefficient here? 3. So it represents 3 molecules of H2, 3 moles of H2, 3 liters of H2 are reacting. And what was the coefficient here? 2. So it represents 2 molecules of NH3 were representing, और यहाँ पे 2 moles and यहाँ पे 2 liters bun right form. Yes, right? So you just need to calculate one thing, that's mass. Mass आपको calculate करना पड़ेगा by the simple formula. Mass will be given by N into W, number of moles into molar mass. Right? Copy it. Yes. May I ask? One more example here. Huh? I have one more example. Listen now. This is a balanced chemical equation. अब देखें, this is a balanced chemical equation. Reactant side में check करें. You have 2K here and 2K here too. यहाँ देखें 2Cl, 2Cl, 3 6O and 3 6O. So this is a balanced chemical equation. अच्छा, यहाँ पे कुछ numbers use हुए हैं इसको balance करने के लिए. वो numbers check करें. यहाँ 2 use हुआ है, here 2 and here 3, and I already told you that these numbers are numerals which are used to balance this chemical equation. They are called stoichiometric coefficients, right? Yes. So what's the coefficient here? 2. Okay, tell me, what's the coefficient here? 2, and here we have 3. What does this coefficient represent? I already told. It means 2 molecules of KClO3 dissociate and they form how many molecules? 2 molecules of KCl, right? And they form how many molecules of O2? 3 molecules of O2. So this is the information about the reactant that's dissociating and the products that are formed. But this information is in terms of molecules. I can convert it into moles, I can convert it into volume, I can convert it into mass. Okay, tell me, what should I write here? How many moles? 2 moles. Right, अब हम बार-बार नहीं करेंगे because I told you coefficient is same as number of molecules, number of moles and volume. Alright? So I can write 2 moles of this reactant. 2 moles of this reactant dissociate to form how many moles of this reactant? Yes, again 2 moles of this reactant and 3 moles of O2, right? Yes. And tell me about volumes. Yes. So what should be the volume here? 2 liters of this reactant react and they will form
2 liters of this reactant and they will form 3 liters of this reactant, provided if all of them are in gases. If all of them are in gaseous state, ये सारे gases होने चाहिए तब हम वॉल्यूम निकालते हैं, because that relation is applicable for gases only. N is V by 22.4, yes. Right? And then tell me, I can calculate the mass. Yes. I can calculate the mass. How should I calculate mass? We have a formula. Mass will be number of moles into molar mass, right? Yes, it should be number of moles into. So how many moles I have here? N. That's 2. Yes. Multiplied by molar mass. Molar mass of KCl3. पोटेशियम का आ गया 39, am I right? Yes, प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 multiplied by 3. So this is 48, this is 39, this is 35.5. So what's it equal to? Tell me. What's it equal to? 60, and this will be 74, 40, 74.5 and 48. Tell me, what's that? 74.5, yes. 122.5. 1? Yes, so this is 122.5 grams, right? Okay. Tell me, so I can convert this into mass. How much? Number of moles, that's N, that's 2. Into its molar mass, 39 plus 35.5, 74.5, right? Yes. Okay, and here I can write it. 3, number of moles is 3, multiplied by its molar mass. That's 32. Yes. Because 16 is the molar mass of one oxygen atom. We have 2 oxygen atoms, right? So this is how much? 245 grams. 245 grams. And what's this? Yes, what's this? 149 grams, right? And what's this? 64 grams. So here I have the stoichiometric relation between reactants and products in terms of mass, in terms of volume, right? And in terms of moles, then in terms of molecules. समझ आई बेटा? Yes, sir. Okay, so this is how you'll write it. This is how you'll write it. Yes. Where? Oh, sorry. This 96. Okay. This 96 grams. Fine. You can copy it, beta. You can copy it. Yes. You can copy it.